Hello, Matujima, and you're watching Hornbill TV's Prime Time. Now headlines. Prime Minister Narendra Modi will officially commission the Vizhinjam International Seaport on May 2, Friday, placing Kerala firmly on the global maritime map. China on Wednesday accused the US for originating COVID-19, claiming America was trying to shift the blame after US President Donald Trump said that the disease was leaked from a Wuhan lab, New York Post reported. The Border Security Force, in coordination with Punjab Police, foiled a terror plot and recovered a cache of arms and ammunition near Baropal village in Amritsar district. The Special NIA Court has allowed the National Investigation Agency NIA to obtain voice and handwriting samples of 2611 mastermind Tawahu Rana. Prime Minister Narendra Modi will officially commission the Vizhinjam International Seaport on May 2, Friday, placing Kerala firmly on the global maritime map. The port is expected to transform India's role in international trade and shipping. The deep water port has been developed by Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ), India's largest port developer and part of the Adani Group under public-private partnership. The project was completed at an estimated cost of Rs 8,867 crore. Following a successful trial run, the port received its commercial commissioning certificate on December 4 last year. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has said that this is not just the opening of a new port, but the beginning of a new era that will give Indian trade and logistics a stronger global presence. Vizhinjam is India's first dedicated transshipment port and also the country's first semi-automated port. It sits just 10 nautical miles from a key international shipping route and has naturally deep waters, making it ideal for large cargo ships. The Election Commission of India has introduced 3 new initiatives aimed at improving electoral roll accuracy and enhancing voter-related services as per an official press release on Thursday. As part of the first initiative, the ECI will now obtain debt registration data electronically from the Registrar General of India. According to the release, this step is in line with Rule 9 of the Registration of Electors Rule 1960 and Section 3, Clause 5B of the Registration of Births and Deaths Act 1969. The electronic sharing of data will allow electoral registration officers to receive timely information about registered deaths. Booth-level officers will be able to verify this information during field visits without requiring a formal application under Form 7, ECI stated. These measures were discussed during the March 2025 Conference of Chief Electoral Officers, which was held under the guidance of Chief Election Commissioners Ganesh Kumar and in the presence of Election Commissioners Sukhbir Singh, Sandhu and Vivek Doshi. The Commission stated that these steps are part of ongoing efforts to streamline electoral processes and improve interaction between voters and election officials. The 23rd Punya Viva Sammilan was held on Thursday in Katukato, located in Raleigh region of Sagar. Chief Minister Dr. Mohan Yadav, who was present at the event, emphasized the importance of supporting remarriage for women who have been widowed or abandoned by their husbands. He stated, if a woman's husband passes away or leaves her, it becomes a responsibility to help her rebuild her life, including encouraging remarriage. He further remarked that often in the past, when a married daughter lost her husband, her in-laws, treating her like their own daughter, would even take the initiative to get her remarried. Such sentiments deserve appreciation. He added, the event held at the Sardar Vallabhbhai Patel Stadium witnessed the weddings of nearly 3,000 couples. सब लोग जिसके हाथ में माला है वही खड़े होंगे, जिसके
पारिवारिक समागम का जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमारे लिए गोपाल जी भाई साहब ने बताया, पटेल समाज के 460, अहिरवार समाज के 457, लोधी समाज के 257, काची समाज के 193, कुर्मी समाज के 178, गौड़ समाज के 173, कितने प्रकार के समाज जोड़े आपने। और यही तो बात है हमारे लिए। गजानन गणपति की पूजा के साथ हमारे अपने सनातन धर्म के अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जो वेद वाक्य में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, इस प्रकार से अंजाम देने की बात पड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय की आवश्यकता। जब सामूहिक विवाह की बात करते हैं तो सामूहिक विवाह में केवल आपके अपने दो बच्चे बच्ची का विवाह नहीं है, ये दो परिवार, दो कुटुंब का मिलन है। और दो कुटुंब नहीं, दो गांव, दो शहर दूर दूर से आकर के उन्हें आशीर्वाद दिया है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हम इस कार्यक्रम को अपना निजी कार्यक्रम के तौर पर करते हैं। मैंने अपने स्वयं के बेटे की, इकलौते बेटे की और बेटी की शादी इसी कार्यक्रम में की थी। मैंने कोई रिसेप्शन नहीं दिया, अलग से कोई 5 स्टार होटल में नहीं गया, यहीं पे इस कार्यक्रम। ये हमारे पुण्यवाय, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो ये कन्यादान कार्यक्रम या पुण्यवाय कार्यक्रम, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये सहस्त्र यज्ञों के विरोध माना गया है। यदि आत्मा के साथ इसको करे, ये स्वरूप इसका विस्तृत हो गया है। और पिछले एक हफ्ते जब पोर्टल बंद किया था तो हजारों लोग आए, उन्होंने कहा हम भी शामिल, हम भी शामिल। नहीं कर पाया, मजबूरी थी, क्षमा चाहता हूँ। अगले वर्ष यदि कार्यक्रम चलता रहेगा तो हम राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को करेंगे। आगे और भी कहाँ तक ले जाने की आपकी इच्छा है? इसी कार्यक्रम को इसी तरह से और भी कहाँ तक ले जाने की इच्छा है? देखिए, जब सरकार हमारी नहीं थी 2001 में, 2002 में, 2003 में, तब भी हम इस कार्यक्रम को करते थे। आज भी हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सरकार है तो सरकार पे जितना भी मिलता है उससे उस पर भी निर्भरता है, लेकिन हम अपने खुद के संसाधनों पर और खुद के सिस्टम पे, हम कोई पुलिस के कर्मचारियों के भरोसे नहीं करते। व्यवस्था वो बनाएंगे। हमारा आत्मनियंत्रित कार्यक्रम चलता है अपने आप, शिव मोटिव। अब ये 7000 जोड़े हैं, 10-10 लोग भी आए होंगे प्रत्येक के साथ, तो 70,000 लोगों की भीड़ तो यही हो गई। और अन्य लोग जो दर्शनार्थी आए, सारे लोग मान के चलो कि 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ जो है, उसको नियंत्रित करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुरुआत की थी तो आपने कुछ ऐसा सोचा था? इतना नहीं सोचा, इतना नहीं। आपको खाने मिल रहे हैं प्रतिवर्ष? हाँ, वर्ष शुरू किया 2001 से। पहले हम अपने क्षेत्र का करते थे, इसमें करीब 1200-1500 शादियां होती थी। इस बार हमने स्वरूप विस्तार किया, बुंदेलखंड किया, तो दमोह जिले की टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना सभी जिलों की इसमें जोड़े आए हैं, शादियां हो रही हैं। और ये ब्रांड बन गया है, लोग चाहते हैं हमारी गड़ाउटा में शादी हो। तो ये अपने आप में प्रतिष्ठा की बात है हम लोगों के लिए कि लोग चाहते हैं कि यहाँ में बोले किसी दूसरे क्षेत्र का रहने वाला वो यदि हो भी रही हो, तब वो कहता है हमें वो आने, हम तो गड़ाउटा में करवा। ये पूरी शादी आपके पूरे क्षेत्र, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहीं तक के सीमित है? बुंदेलखंड की, पूरे बुंदेलखंड की। दमोह जिले के 300-350 जोड़े हैं, सागर जिले के हैं, टीकमगढ़ के हैं, छतरपुर के हैं, पन्ना के हैं, दमोह के हैं, और तो और भोपाल के भी आज उन्होंने शामिल। NS Fighter Pilot Marshal Ashutosh Dixit took over as the Chief of Integrated Defence Staff to the Chairman Chiefs of Staffs Committee CISC here on Thursday. Air Marshal Dixit was accorded a ceremonial Tri-Service Guard of Honor at the South Block launch in Delhi today as he assumed the role of Chief of Integrated Defence Staff. Prior to taking over as CISC, Air Marshal Ashutosh Dixit served as the Air Officer Commanding-in-Chief of Central Air Command.
During his tenure, he focused on enhancing operational readiness and fostering coordination with other services in Uttar Pradesh and the central region. According to a release, Air Marshal Dixit was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force on December 6, 1986. During his distinguished career spanning nearly 4 decades, the Air Marshal has held a variety of command, staff and instructional appointments. The officer is an alumnus of the National Defence Academy, the Defence Service Staff College, Bangladesh and the National Defence College in New Delhi. We'll take a short break. Keep watching. Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Every Day is your #1 choice. Welcome back. The Border Security Force, in coordination with Punjab Police, foiled a terror plot and recovered a cache of arms and ammunition near Barupal village in Amritsar district. Acting on credible intelligence provided by the BSF intelligence wing, a joint search operation was launched on Wednesday evening. During the operation, the security forces recovered 2 hand grenades, 3 pistols, 6 magazines and 50 live rounds of ammunition. The recovered weapons and explosives have been handed over to the local police for further investigation. This joint efforts once again reflects the high level of preparedness and alertness of BSF. The swift and coordinated action with the Punjab Police has prevented a possible major terror incident and reaffirmed its commitment to national security and the protection of citizens. Earlier, 2 unidentified armed assailants shot gangster Ravneet Singh alias Soni Mote in Amritsar's Kadianwala Bazaar on Tuesday. On Monday, the Special Task Force (STF), in collaboration with Jadar Police, arrested notorious gangster and history cheater Kunal Jun, who was absconding in several criminal cases, officials said. Police said that Kunal Jun, a resident of Bahadugar, has a total of 15 criminal cases registered against him. Superintendent of Police SP Colonel Range Wasim Akram said Kunal Jun is originally a resident of Nuna Majra village of Bahadugar. He has a history of criminal activities. About 15 cases have been registered against him at various places in Rohtak and Jajjar districts. The SP said that the accused Kunal Jun had fled India using a fraudulent passport and continued to orchestrate criminal activities from abroad, evading arrest. Jun was absconding in many cases. He was also arrested in one case when he was granted bail. He fled abroad with a fake passport. Firstly, he fled to Dubai. He wanted to move to the US illegally so that he could operate his gang from there, but he added. बहादुर के नाम नूना माजरा गांव का एक निवासी है, जिसके काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। करीब अभी तक कुल मिला के उसके खिलाफ 15 मुकदमे अलग अलग धाराओं में, जो संगीन अपराधों में दर्ज हुए हैं। और इनमें से कुछ अपराधों में ये जमानत पे था और जमानत के दौरान ही इसने फर्जी पासपोर्ट बनवा के भारत से भागने की प्रयास की और पहले दुबई और दुबई के अलावा दूसरे देशों में होते हुए ये यूएस में डंकी के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहा था, और ताकि वहाँ से जाके अपना गैंग चला सके। तो इसको जो प्रोसेस के बीच में जो बीच की कंट्रीज़ थी, वहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन के आधार पे और कॉपरेशन के आधार पे इंटरपोल के मीडियम से वहाँ पे इसको डिटेन कराया गया। और डिटेंशन के बाद में उसकी फर्दर
जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के आधार पे, एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट के आधार पे इसके खिलाफ संबंधित देश कजाकिस्तान में कार्रवाई चल रही थी। उसकी अप्रूवल के बाद में इसको हिंदुस्तान लाया जा सका। ये 1 सितंबर को यहाँ दिल्ली से शारजा की ये फ़्लाइट से गया था, उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके। उसके बाद में करीब 26-27 सितंबर तक ये शारजा दुबई में रहा। उसके बाद में फर्दर दूसरे अन्य देशों जैसे अजरबैजान और कजाकिस्तान में इसके द्वारा कुछ समय बिताया गया था। और ये कजाकिस्तान में अरेस्ट होने से पहले इसका इरादा आगे यूक्रेन जाने का था, और यूक्रेन के बाद आगे फर्दर यूएसए के लिए डंकी रूट से जाने का। कौन कौन से बड़े मामले थे इनके? मुख्य मामलों में आप जैसे देखें तो एक रोहतक में अभी ट्रिपल मर्डर हुआ था 20 सितंबर को। उस ट्रिपल मर्डर में इसके द्वारा खुद क्लेम भी किया गया था, बाकी लोग सारे में। उस ट्रिपल मर्डर में जो दूसरे विरोधी ग्रुप था सुमित कुलोट्रा, उसके 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, और राहुल बाबा गैंग का उसमें ना हाथ सामने आया था। तो राहुल बाबा का निकट संबंध सहयोगी है, उसका साथी है, उसके गैंग के साथ काम करता है। इसके अलावा इसने एक बहादुरगढ़ में भी एक आदमी को गोली चला के धमकी देने की एक घटना और अपराध दर्ज हुआ था, उसकी तफ्तीश की गई है। उसमें इसका रोल और भूमिका जो है संदिग्ध है, जिसके बारे में हम लोग अभी आज गिरफ्तारी डाल के रिमांड लेके इसके बारे में पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद में इसमें स्थिति और साफ हो जाएगी। ये अभी पूछताछ की, क्योंकि 1 साल से करीब इसका डिटेंशन का पीरियड बाहर है, तो इस बीच में क्या इसने फ़ोन किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ इवन डिटेंशन के दौरान क्या इसको जेल के अंदर मोबाइल की सुविधा थी या नहीं थी, ये चीज़ अब तो पूछताछ के दौरान चेक की जाएगी। सर, पहले कौन से केस थे जेल में जिसके बाद फरार हुए? एक बहादुरगढ़ के ही एक मुकदमे में, ये एक्सटॉर्शन के मुकदमे में पहले गिरफ्तार हुए हैं, और इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कई सारे मुकदमे हैं, और इवन प्रिजन के रहने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल के मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज हुआ था। कोई नाम वगैरह इसके साथ? इनाम का भी मुझे कोई इस तरह की सूचना नहीं है, मगर इसकी गिरफ्तारी के लिए STF की तरफ से, बहादुरगढ़ पुलिस, झज्जर की पुलिस की तरफ से डिफरेंट एजेंसीज़ और ख़ासतौर पे इंटरपोल चैनल्स और जो एक्स्ट्रेडिशन के अलग अलग चैनल्स हैं, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। लगातार कोऑर्डिनेशन में, मेहनत से, डॉक्यूमेंटेशन से इसकी बाहर इंडिया लाने के लिए जो प्रयास जारी किए जा रहे थे, वो वाकई बहुत तेज़ स्पीड से और गंभीरता से किए जा रहे थे। तो इसकी वजह से ये संभव हो सका है कि इतने कम समय में एक अपराधी जो कि विदेश में जाकर शरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, उसको यहाँ लाया जा सका। सर, क्राइम में आने से पहले प्रोफाइल क्या कितना पढ़ा लिखा है, क्या लिया करता है? ये लड़का इसकी एजुकेशनल जो है वो तो करीब आई थिंक ये 12th पास है, मगर लोकल काम में आसपास इसके पिताजी का भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में परिवार के, वो हमारे संज्ञान में इसकी गिरफ्तारी के बाद में आई थी, जिसके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। और बहादुरगढ़ और रोहतक के जो आसपास के इलाके के अपराधी हैं, उन अपराधी से इसका पुराना संपर्क रहा है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? आज इनको अदालत में अभी पेश किया गया। पेश करने के बाद में इसको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड पे लेने के बाद में जो इसके बकाया केस हैं, जैसे 2 केस का नाम मैंने लिया है अभी ख़ास तौर पे, इन केस में इसकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद में उससे संबंधित पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो मुकदमे में जिनकी इसमें तारीखें तोड़ी हैं और वहाँ से ट्रायल के दौरान तारीखों को पेश नहीं हुआ, उसमें सब में ये भगोड़ा अपराधी घोषित किया हुआ है, और भगोड़ा अपराधी होने के कारण अब जेल से इस संबंध में जो मुकदमे दर्ज हुए होंगे और जो कार्रवाई होगी वो अदालत के आदेश के अनुसार अमल में लाई जाएगी। अभी ये तफ्तीश के दौरान क्लियर होगा कि इस फरारी के दौरान कौन इसको मदद कर रहे थे, इसका पासपोर्ट बनवाने में किन लोगों ने मदद की। एक मुकदमा इसके फर्जी पासपोर्ट के संबंध में STF बहादुरगढ़ उसकी तफ्तीश कर रही है, और उसके संबंध में हम लोग कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है, मगर उसमें फर्जी दस्तावेज किसने बनाए थे और कागज़ किसने बनाए थे, इसके संबंध में अभी तफ्तीश, इसकी गहन जांच की जाएगी इसकी मौजूदगी में, इसकी इंटरोगेशन के दौरान। China on Wednesday accused the US for originating COVID-19, claiming America was trying to shift the blame after US President Donald Trump said that the disease was leaked from a Wuhan lab, New York Post reported. The Chinese government, he said, that substantial evidence suggested that COVID-19 might have emerged from the US earlier than the outbreak in China, while insisting the lab leak theory was extremely unlikely in a white paper. Chinese officials said the US government, instead of facing squarely its failures in response to COVID-19 and reflecting on its shortcomings, has tried to shift the blame and divert people's attention by shamelessly politicizing SARS-CoV-2 origins
tracing. According to the report, COVID-19 circulated in the US earlier than it was officially determined. The Chinese government's allegations against the US followed the White House revamped its COVID-19 information earlier this month to push the statement that COVID-19 leaked out of a lab in the Wuhan Institute of Virology. A section on the new White House webpage stated a lab-related incident involving gain-of-function research is the most likely to origin of COVID-19, New York Post reported. The Special NIA Court has allowed the National Investigation Agency NIA to obtain voice and handwriting samples of 2611 mastermind Rana, currently in NIA custody. Rana was recently extradited to India from the United States. The Special NIA Judge Chandrajit Singh on Wednesday granted approval for the NIA's request to collect handwriting and voice samples of Rana. On Monday, the same court has extended the National Investigation Agency's NIA custody of Rana, an accused in the 2611 Mumbai terror attacks, for a further 12 days. During the hearing, the NIA informed the court that Rana had been confronted with a substantial volume of records and evidence related to the 2611 Mumbai terror attacks. The agency argued that further custody was necessary to complete his interrogation. While seeking an extension of his remand, the NIA argued that Rana had been evasive during questioning and was not cooperating with the investigation. The agency emphasized the need for further custodial interrogation to extract crucial information related to his alleged involvement in the attacks. In the legal proceedings concerning Rana, the National Investigation Agency NIA was represented by Senior Advocate Dayan Krishnan and Special Public Prosecutor Narendran Man. On the other hand, Advocate Piyush Sajdeva from Legal Service defended Rana in the matter. However, Rana's counsel opposed the extension of his remand, contending that additional custodial interrogation was unwarranted. Six people, including 5 medical students, were killed in a road accident in Andhra Pradesh's Nellore district, police said on Wednesday. According to officials, the accident occurred when a speeding car lost control and rammed into a house in Botiredi-Yapalam area of the district. 5 of the deceased were students of Narayana Medical College. The 6th victim, identified as Ramaya, was at a nearby shop when the car crashed. Out of the 6, 5 were students at Narayana Medical College. Another individual, Rama Anaya, who was in a nearby shop, also lost his life, he added. పవర్ షేరింగ్ వల్ల దానివల్ల తిరిగేసి పడిపోయింది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ గుడిసెలో పెద్ద ఉన్నాడు. కారు తగిలినప్పుడు కారులో 6 మంది ఉన్నారు. 6 మంది ఉన్నారు. అన్న గుడిసె పడిపోగానే రాళ్ళు గిళ్ళు పెద్ద మీద పడిపోయినప్పుడు ఇంకా మేము లాగే ప్రయత్నం చేసాం సార్. చాలా టైం పట్టింది. పట్టినప్పుడు అంబులెన్స్ వచ్చింది. దాంట్లో అయితే ఎక్కించి పంపించాము. అదే సార్ జరిగింది. అంటే స్పాట్లో అయితే ఒక 2 అనుకున్నాము. 2 అయితే అసలు ఏమి ఉలుకు పలుకు లేదు. మనకి ఐడియా లేదు సార్. కానీ ఒక అతను వచ్చాడు. అతను వచ్చినప్పుడు ఒక ఇతను అయితే గుర్తుపెట్టాడు. గుర్తుపెడితే ఎంత పేరు పెట్టి పిలిచాడు. ఎక్కడోళ్ళు అంటే బుచ్చోళ్ళు అని అన్నారు సార్. అది జరిగింది. మేము బండికి పోతుంటాము ఎంఎస్సిడి ఫ్యాక్టరీలో. మేము బండికి పోయేసి ఇప్పుడే వచ్చాము. రాగానే అన్నం తెచ్చుకోవాలని చెప్పి బైక్ కోసం వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు ఆ చెట్టు కింద కాడి నుంచి ఇటు బయట రోడ్లో నుంచి పెద్ద సౌండ్ వస్తూ ఉంది, కీ అని. ఏందనేది సౌండ్ వస్తుందని చెప్పి బయట చూస్తా, రోడ్డు సైజ్ చూస్తా ఉన్నాం. కారు అక్కడి నుంచి క్రాష్గా రావడం దిమ్మి కొట్టేసింది. ఆ దిమ్మ కింద పక్కనే గోడ కింద ఒక అతను అంగడగళ్ళ అతను అన్నం తినేసి కొనుక్కొని అతని మీద కారు పడిపోయేసి మొత్తం అతను చనిపోయేసి కారులో ఒక అతను మాత్రం బతికాడు. 2 మాత్రం ప్రాణాలతో కొడుకులాడుతున్నారు. 2 మాత్రం చనిపోయి ఉన్నారు. మా మేస్త్రికి ఫోన్ చేసి, అన్న ఇట్లా ప్రాణాలతో కొడుకులాడుతున్నారు, ఒకరంతా గుళ్ళు ఉంది కదా మంది, ఎట్టగట్ట అయింది నాన్న, ప్రాణాలతో ఉన్నారు కదా, పోతే ఎట్టగట్ట బతి మనం ప్రాణం కాపాడదాము అని చెప్పి ఫోన్ చేసి పిలిపించా. నేను వచ్చే లోపల అప్పటికే చాలా ఇదిగా ఉన్నారు. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. Good night.